Now we will see some of the important case studies related to the congenital cardiac disorders. Okay. So this is the first case. Everybody please read it. A 6-month-old healthy infant presented with mild fever and cold and followed by a day later with breathlessness. So whenever there is a breathlessness, we always think about either a respiratory problem, either a cardiac problem. Okay. On physical examination, growth and development of the child is normal. There is no much sickness. The child is not sick looking, and it is also not, but slightly irritable. Child is slightly irritable, but not exactly sick looking. Okay, heart rate is 135 and the respiratory rate is 70. This is 6-month-old baby. Now you just see heart rate 135 and respiratory rate 70, whether they are proportional to each other. Okay, you look at that, and no chest retraction is there, and hyper resonant note is present on percussion on the both sides. Hyper resonant note is present on percussion on the both sides. There is no any extra sound. Liver is about 3 finger palpated. 6-month-old baby, liver is palpable 3 finger. And liver span in this child is 5 centimeter. And the spleen is 1 finger palpable. Now this is the case, and now you have to answer. 6-month-old baby infant presented with the mild fever and cold, followed by a day later, एक दिन के बाद, he started with the breathlessness. ठीक है, अब 6 महीने का बच्चा है तो वो छोटा बच्चा है, फीडिंग बच्चा है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये कोई कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकता है, because breathlessness is there. This is the question. Now what is your opinion? Tell me. Come on. गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं. Come on. सर इसमें फीवर के साथ में ब्रेथलेसनेस है, तो सर इसमें कफ तो इसमें मतलब होता भी नहीं है और इसमें है भी नहीं सर उस टाइप से, तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ही हो सकता है प्रॉब्लम इसको. ओके, हेल्दी इन्फेंट प्रेजेंटेड विद माइल्ड फीवर है. यस सर. एंड कोल्ड है. अब कफ एग्जैक्टली नहीं बताया, कोल्ड है बता रहे. हो सकता है खांसी को ही कोल्ड बोल रहे हो, विद फीवर and cold, but followed by later with breathlessness. शुरू में breathlessness नहीं था, एक दिन के बाद उसको breathlessness हुआ. सर तो breathlessness तभी होगा जब lower respiratory या alveoli involved होगा. Yes, definitely. ठीक है. Then now they are telling that growth and development of the child is normal. So when the growth and development of the child is normal, what it suggests? It's very clear that it is not a chronic problem, isn't it? It is not a chronic problem. Whatever is a recent problem, and there is no much sick looking child. So when it is not sick looking child, definitely it is not even the bacterial. The fever which is coming, it is not definitely because of bacterial. Maybe a simple viral infection, but child is irritable. Okay, child is irritable. Now if I say it is a viral infection, then there should be multiple symptoms will be there. We have multiple symptoms, isn't it? We have got fever, we have got cold, we have got then breathlessness. So multiple symptoms are there. Child is also irritable. Okay. Now if you look into heart rate is 135 and respiratory rate is 70. Now for 6 months, whether this is proportional to each other. ठीक है, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी बीच का रेशियो कितना होना चाहिए? व्हाट इज द रेशियो? नॉर्मल हम लोग में कितना है रेशियो? द रेस्पिरेटरी रेट तो बहुत ज्यादा है. 1:3. अगर आपका 20 आपका रेस्पिरेटरी रेट 20 है तो पल्स रेट कितना होना चाहिए? 72. मतलब सर एडल्ट का, बच्चों में तो 120 और मतलब 140 अगर होनी हो नेट में तो 30. वहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट भी 40 है ना.
हाँ, तो 3 से 4 गुना होता है फिर. 4 फुट होता है. So now you tell me 135 and 70 whether they anyway they are proportional to each other. नहीं, नॉर्मल है. So that means it is not जो भी एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बिकॉज रेस्पिरेटेड इज मोर एंड रेशियो ऑफ 1:3 और 1:4 सो दैट इज नॉट फुलफिल्ड. ओके, सो 70 के हिसाब से हार्ट रेट उसका होना चाहिए था 200 के आसपास होना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. सिर्फ हार्ट रेट इज ओके 135 ऑलमोस्ट ऑल नॉर्मल. ओके, नॉर्मल टू ए 6 month old baby, maybe slightly increased, but respiratory rate is more increased. Okay, totally abnormal. So this is the situation. That means respiratory rate is more now, but there is no chest retractions. There is no chest retraction, and there is a hyper resonant note. जब वो percussion कर रहे हैं, so you are getting a hyper resonant note. So what it suggests when there is a hyper resonant note? What it suggests? Bronchiolitis. So there is more air inside, है ना? कि there is more air inside. There is over tapping of the air is there. Therefore, it is leading to a hyper resonant percussion. So few of the things are very clear. There is no extra sounds. Okay, extra sound is not there. तो रेजोनेंट है तो इसका मतलब हाइपर रेजोनेंट है तो ज़्यादा एयर अंदर है. ठीक है, बच्चा सिक नहीं है तो हो सकता है कि वायरल है. और एज ऑफ द चाइल्ड 6 month है. 6 month में अगर कोई भी इस तरीके का प्रेजेंटेशन आता है, सो देन वी हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट द कॉमन viral infections. Now come to the last point, that is liver 3 finger dilated, palpated. Now do you think it is normal? Liver is 3 finger palpated है 6 महीने का बच्चा. Is it normal? Yes, sir. Liver is slightly palpated, yes, but 3 finger ज़्यादा है तो. थोड़ा बहुत ज़्यादा है. लिवर स्पैन इज 5 centimeter. स्पैन भी, लिवर का स्पैन पता होना चाहिए बच्चों में. लिवर स्पैन इज द डिस्टेंस बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर. सो इन दिस केस द लिवर स्पैन इज 5 centimeter. And spleen is also 1 finger palpable. Yes, tip of the spleen is palpable in newborns or sometime in neonates. Anyway, so now we have to come to a conclusion by looking at this particular case. क्योंकि हमारा कंसर्न है जो यहाँ पे जो ब्रेथलेसनेस हुआ है. Okay, so let us see the case one by one. Okay, a 6 month old infant is presented with the fever, cold and breathlessness. Probably looks like the viral infection. Okay, child is also not sick looking, and 6 month age में जो है ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम है, वायरल इन्फेक्शन ही ज़्यादा होता है. ओके, इट लुक्स लाइक द वायरल इन्फेक्शन नाउ, बट चाइल्ड इज ऑल्सो डेवलप ब्रेथलेसनेस. जब से ब्रेथलेसनेस डेवलपमेंट हुआ तो इसका मतलब है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया. ओके, जब पैरेंका में इन्वॉल्व होगा तभी तो ब्रेथलेसनेस आएगा. सो अलॉन्ग विद द फीवर इज ऑल्सो देयर एंड ऑल्सो देयर इज अ ब्रेथलेसनेस. नाउ देयर इज अ स्लाइट कन्फ्यूजन. नाउ एज ऑफ द चाइल्ड इज 6 month. ओके, सो प्रेजेंस ऑफ ब्रेथलेसनेस सजेस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिस्टल एयरवेज या लोअर एयरवेज. ओके, सो कफ जैसा आपने बताया कि कफ इज ऑलमोस्ट एब्सेंट. कोल्ड बता रहे वो, कोई नेजल कंजेशन को बोलता होगा कि कोल्ड है या ऐसा कुछ, बट कफ इज कैरेक्टरिस्टिकली एब्सेंट इन दिस केस. ओके, सो व्हेन द कफ इज एब्सेंट, वन थिंग इज वेरी क्लियर, दिस इज नॉट ए डिसीज ऑफ द अपर एयरवे. अपर एयरवे है तो वहाँ पे कफ रिसेप्टर्स है और डेफिनेटली आपको कफ आएगा, बट दिस इज नॉट ए डिसीज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयरवेज बिकॉज देर इज नो कफ स्पेसिफिकली नॉट मेंशन्ड, एंड डेफिनेटली इट इज ए डिसीज ऑफ द lower airway, and disease of the lower airway with breathlessness. It is okay. ये तो agreeable है. So there is every chance of a. Now you have to tell me what is a viral infection which occurs the distal, which affects the distal terminal bronchioles in a 6 month old infant. Yes, the answer is आपने बताया था कौन सा है? Bronchiolitis. Because bronchiolitis is the most common infection, respiratory tract infection, which occurs in the 6 month early infancy period, and this is one of the major cause of breathlessness in the newborn. It is caused by a respiratory syncytial virus. Respiratory syncytial virus presented with the breathlessness. So breathlessness ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि lungs के अंदर air trap हुआ है. There is trapping of the air inside. So more air is collected in the lung area, therefore on percussion you are getting hyper resonant note. Okay, so this is how we have to conclude this. Okay, this is a case I think everybody knows, इतना बड़ा case नहीं है, but we have to answer some of the other aspects. What is that?
Usually we use the word pneumonia sometime, isn't it? So whether there is actually no terms like viral pneumonia. Okay, pneumonias are mostly or always bacterial pneumonia. Okay, lobar pneumonia is always bacterial, streptococcal or staphylococcal. Okay, so pneumonia means nothing but inflammatory consolidation of the lungs. So there is no words like a वायरल निमोनिया, ऐसा नहीं है कि ठीक है वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वायरल निमोनिया ऐसा हम नहीं बोलते हैं. सो वायरल इन्फेक्शंस आर यूजुअली शो द जनरलाइज्ड इन्वॉल्वमेंट, वी नो दैट. In case of viral pneumonia, the breathlessness appears very fast, as in this case. So that means viral pneumonia term नहीं होता है. Okay, in this particular case, what happens is breathlessness appears very fast. Second day जो है उसको breathlessness शुरू हो गया. Okay, so if it is bacterial pneumonia, breathlessness appears very late. Bacterial pneumonia क्या है कि it takes some time to get localized. So after 3 or 4 days there may be breathlessness, as it happens in case of a bacterial pneumonia जो हम बोलते हैं pneumonia हो गया बोलते हैं ना. So that is actually bacterial pneumonia. It takes some time for the localization. Now this is not actually the lobar pneumonia or bacterial pneumonia. This is a continuation of the viral infection from the upper respiratory tract to the lower respiratory tract, affecting the terminal bronchioles. But we cannot use the word here like viral pneumonia. ऐसा नहीं है कि we can use the word bronchopneumonia sometime. Okay, bronchopneumonias. So of course, as it is occurring in the 6th month of age and there is involvement of the distal or terminal respiratory bronchioles, this is a case of a bronchiolitis. So bronchiolitis is a condition which is because of the viral infection, involvement of the lower respiratory tract, terminal respiratory bronchioles, and there will be air hunger and breathlessness. Cough is less, fever will be there for the first 1 or 2 days, then fever is also not there, only breathlessness will be there. Only way to handle this condition is just go for oxygenation of the baby continuously. As this is a viral infection, this is self-limiting and that will going to resolve. Till then you have to manage the case. Now what is your opinion on heart rate and the respiratory rate in this case? For the 6-month-old baby, the expected respiratory rate is almost all 40, but in this case it is 70. Definitely it is abnormal. So if that is a case of child would have been extremely sick, but in this case child is not sick. 70 उसका respiratory rate है, उसके बाद भी बच्चा sick looking नहीं है. बाकी कोई भी condition हो जहाँ पे हार्ट रेस्पिरेटरी रेट आपका 70 है, डेफिनेटली बेबी इज सिक लुकिंग, बट बेबी इज क्वाइट हैप्पी. सो मीन टाइम हार्ट रेट इज ऑल्सो नॉट शोइंग द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज. दिस इज व्हाट आई एम टोल्ड. हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट में एक प्रोपोर्शनेट नहीं है. हार्ट रेट तो अपना जगह में ऑलमोस्ट ऑल नॉर्मल लेवल पे है, बट रेस्पिरेटरी रेट सिर्फ बढ़ा हुआ है, ओनली रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है. सो दे आर नॉट प्रोपोर्शनेट. सो मीन टाइम देर इज नो चेस्ट रिट्रैक्शंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Chest retractions when present, it shows that air hunger and there is more need of air inside. Okay, so they make an effort and as a result there is a retraction. ठीक है, बहुत ज़्यादा एयर अंदर मतलब ऑक्सीजनेशन कम है, एयर अंदर कम जा रहा है, तो इस कोशिश में क्या बॉडी क्या करता है, लंग्स क्या करता है, ज़्यादा ट्राई टू सक मोर एंड मोर एयर. So for that it has to create a more and more negative pressure there. So in the process what happens, there is a formation of the chest retractions. Okay, chest retractions. But in this case, although there is a respiratory rate of 70, there is no chest retraction. So उसका मतलब क्या है कि अंदर जो है ज़्यादा एयर का ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जो है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है. Okay, so this is commonly seen in bronchiolitis. In the bronchiolitis, there is inflammation of the terminal bronchioles. The alveoli जो है वो इन्फ्लेम हो चुका है, वो ओपन नहीं हो पाता है. ठीक है, तो इसलिए एयर का कमी नहीं बोल सकता है, एयर वहाँ तक रीच नहीं होता है. ठीक है, और alveoli के अंदर एंटर नहीं हो पाता है. So this is commonly seen in bronchiolitis and upper airway obstructions, bronchial asthma and pneumonia are some of the important differential diagnoses. So this is common. Of course, क्या है कि ये differential diagnosis में आता है. So this type of presentation where respiratory rate is increased, heart rate is almost all normal, there is no chest retractions. Okay, child is looking well. Okay, this can be seen in number of conditions. One of the most common condition as we discussed is the bronchiolitis. Other conditions, sometimes even in case of upper airway obstructions also this is seen. Upper airway obstruction. Sometime in the initial part of the stages of the bronchial asthma also it is seen. And sometime even in case of
sometimes pneumonias also, this presentation can be seen, but most commonly it is seen in case of bronchiolitis. Now, what is your opinion? Now, if you go further, what are the drug of choice here? Do you go for bronchodilators? No, there is no use of bronchodilators in bronchiolitis. One is it's self-limiting, and another one is there is no any smooth muscle contraction. Okay, there is only inflammation of the terminal bronchioles. अगर स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, ब्रोंकोस्पाज्म चल रहा है, so then the bronchodilators are useful. Okay, but there is no such things. एलर्जिक सब्सटेंस आ गया, उसकी वजह से जो है मास सेल रिलीज हो गया, एंड देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकस. नो, दैट ड्रामा इज नॉट हियर. ओके, upper part of the airway is almost all okay. In the lower part, distal part of the bronchioles, they are get inflamed. Because of inflamed, there is a edema fluid or whatever, and the air is not going inside. Therefore, child is having breathlessness. Okay, so bronchodilators works well when the obstruction is in the upper airway and there is the bronchial muscles are present. In the bronchodilators का use जब upper respiratory tract का infection, upper respiratory tract का obstruction जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पे होता है. ठीक है, bronchodilators कहाँ पे काम करेगा? जहाँ पे bronchus में muscles होगा वहाँ पे, bronchial muscles spasm में. जब आप बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जैसे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम या टर्मिनल एपिथेलियम, तो वहाँ पे तो सिंगल लेयर है, क्यूबॉइडल सेल्स का सिंगल लेयर चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई मसल है ही नहीं है. सो ब्रोंकियल मसल सब कहाँ पे है? ऊपर है, अपर एयरवे में. ठीक है, सो जब नीचे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लेयर क्यूबॉइडल सेल्स का रहता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी टर्मिनल्स, रेस्पिरेटरी टर्मिनल्स. ठीक है, तो वहाँ पे मसल ही नहीं है, तो ब्रोंको मसल प्रॉब्लम कहाँ पे? टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, जहाँ पे ब्रोंकियल मसल ही नहीं है, तो वहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर्स दे के क्या फायदा? देयर इज नो यूज ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स. ओके, सो एज वी गो डाउन देयर इज ओनली सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबॉइडल सेल्स एंड देयर इज लेस रिसेप्टर्स, सो ब्रोंकोडायलेटर्स आर नॉट मच यूजफुल. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, तो यहाँ पे एक्सरे में आपको एक्सरे में किया नहीं आपने, ऑन परकशन आपको मिला हाइपर रेजोनेंस, है ना, हाइपर रेजोनेंस मिला. ठीक है, और ब्रेथलेसनेस तो है ही है इसको. वाई इट इज नॉट ए केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स? फीवर एक है यहाँ पे तो इंडिकेट करते हैं इन्फेक्शन को. अदरवाइज वाई इट इज नॉट ए सिंपल केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स? बहुत ज़्यादा हवा भरा हुआ है पेरिकार्डियम में वगैरह. ओके, it is not a case of pneumothorax because most of the time pneumothorax is always sudden onset, maybe because of some of the injuries, rupture, spontaneous pneumothorax हम बोलते हैं. कोई इंजरी हुआ, रप्चर हुआ, तो सडनली हवा जो है पेरिकार्डियम के अंदर भर गया, that leads to pneumothorax. So in case of pneumothorax, always the presentation is acute. Suppose sometime pneumothorax can also occur as a complication of tuberculosis cavity rupture. ठीक है, वो भी सडन ही होएगा. ट्यूबरक्लोसिस का कैविटी पड़ा हुआ, एक दिन जो है ट्यूबरक्लोसिस का कैविटी रप्चर हो गया, तो वहाँ से हवा जो है पेरिकार्डियम में प्लूरल, अब तक मैं पेरिकार्डियम बोल रहा था, शायद पेरिकार्डियम नहीं है, प्लूरल स्पेस में हवा जाना शुरू हो गया. सो देन प्लूरल स्पेस इज फिल्ड विद द एयर, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमोथोरैक्स. ओके, सो दिस इज सडन ऑनसेट, दिस इज नॉट ए स्लो ऑनसेट. ओके, यहाँ पे तो इतना सडन नहीं है. ब्रेथलेसनेस, पहले फीवर हुआ, कफ हुआ, कोल्ड हुआ, और उसके बाद उसको दूसरा या तीसरा दिन जो है उसको ब्रेथलेसनेस शुरू हुआ. सो दिस इज नॉट सडन ऑनसेट. इन केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स द ऑनसेट इज वेरी सडन. दिस सडन ऑनसेट मे बी प्रेसिपिटेटेड बाय एनी इंजुरीज, एनी रप्चर और वट एवर मे बी द केस. ओके, सो दिस इज नॉट ए केस ऑफ pneumothorax. So what is your opinion on this particular part? What is that? The liver is get enlarged, isn't it? Liver is get enlarged. So how you comment on this? So 3 finger liver is enlarged now here. Okay, so in the newborn, of course, some portion of the liver is palpable in the early days, but not up to 3 fingers. But it's again very clear, just apply your common sense. Liver is now actually pushed down. Okay, liver enlarge नहीं हुआ है यहाँ पे. जो liver जो है थोड़ा बहुत बच्चों में नीचे push हुआ है, वो इसलिए push हुआ है because the a lung is now having pneumothoracic like condition. That means lung is overinflated. When the lung is overinflated, so liver is quite pushed down, and when it is palpated, you are getting, that means liver is coming down now, down the costal margin on the right hypochondrium. So when you palpate, it is palpable. It is not because of enlargement, rather it is pushed down by the hyperinflated
Lung is hyperinflated in this case because of bronchiolitis. Air hunger is there. Okay, so resonant node is also there. Okay, so liver span is normally 5 centimeter, and for 6 months of old baby. Now liver span is given 5 centimeter. लिवर इज पाल्पेबल 3 सेंटीमीटर. यहीं पे आपको पता होना चाहिए. देखो अगर लिवर 6 मंथ ओल्ड बेबी में लिवर स्पैन रहता है 5 सेंटीमीटर. ओके, सो लिवर स्पैन इज 5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स लिवर इज नॉट एनलार्ज्ड, लिवर इज पुश डाउन. लिवर स्पैन मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर टू इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर. वो तो 5 सेंटीमीटर है. एज के हिसाब से वो नॉर्मल है. इसका मतलब क्या है, लिवर बड़ा नहीं है, लिवर नीचे पुश हुआ है. लिवर नीचे push हुआ है. Okay, so this is not the enlargement of the liver, it is just pushing down of the liver because of a hyperinflated lung. Lung is hyperinflated because of bronchiolitis, and there is air trapping and also air hunger and breathlessness. So air is collected in the lungs. Okay, so this is how you have to understand. So although it looks like a case of breathlessness, and also it gives a idea of some of the cardiac problems. Okay, so child is not having any cardiac problem, simple bronchiolitis. So many times a bronchiolitis condition in a newborn baby or early infant, it gives a false impression of some of the cardiac problems. So when you go systematically, presence of the fever here. Okay, so presence of the fever is one of the very important thing here. Okay, presence of the fever. So that itself gives the idea of infective pathology. And इसमें हार्ट फेलियर का भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है सर. हार्ट फेलियर का मतलब इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें टैकीकार्डिया नहीं है. मतलब हार्ट रेट तो इतना नॉर्मल ही है, लेकिन अगर उसके साथ टैकीकार्डिया होता और अगर एक्सरे करने के बाद अगर कार्डियोमेगाली वगैरह ये सब मिलता, दैट इज अ डिफरेंट इशू. बट यहाँ पे केस क्लियर है कि वो हार्ट रेट उसका ज़्यादा नहीं है. Okay, heart rate इसका ज़्यादा नहीं. Okay, you go further now. What is that? A pathology of the lower airway can result in such finding. Okay, so pathology of the lower airway, viral origin. मैंने पहले आपको बताया था कि most of the time lower respiratory tract जब होता है तो usually bacterial होता है. But this is one condition, bronchiolitis, where lower airways are affected, terminal bronchioles are get affected, respiratory bronchioles are get affected. जो lower most portion है alveoli के पास के है, ठीक है, but causes virus. So always you have to remember this bronchiolitis. So overall this looks like a case of acute bronchiolitis. What is the next step? What the next step you will do? We will go for CBC, ESR and X-ray, etc. What is the mainstay of treatment? Yes, nothing to do. When you come to know that this is a viral infection, give the supportive measures. Go for oxygenation. Go for positioning of the child. Okay? Go for some mild chest physiotherapy. Bronchodilators, no use. Steroids, no use. Antibodies, no use. Maintain the hydration of the child, because child is over breathing, isn't it? Air hunger is there. With each breathing, some amount of the water has been lost. So child may develop the fluid deficiency. Okay, so child may develop the dehydration. So always put one IV line and keep the baby well hydrated and continue the oxygen. That's all, and give the proper positional care, etc. Now, how to give the oxygen in 6-month-old baby? Because continuously you have to give the oxygen in the calculated amount, because otherwise oxygen is also dangerous. So how to give the oxygen? If you give by the nasal sponge, it is quite irritative to the child. ठीक है, आप नेजल स्पॉन्ज लगा के रखते हो तो बच्चा इरिटेट हो जाता है, बार बार निकाल देता है. एंड इफ यू गिव बाय मास्क, अगर मास्क से देंगे आप बच्चे को, सो देन देयर इज अ चांस ऑफ लीकेज, है ना. आपका कैलकुलेटेड अमाउंट में नहीं जाएगा, मास्क से जाएगा तो वो देयर इज अ लीकेज. द बेस्ट मेथड इज बाय द ऑक्सीजन हुड बॉक्स मेथड. द बेस्ट मेथड इज बाय ऑक्सीजन हुड बॉक्स मेथड, 6 to 8 liters, and keep on watching the SpO2 because of a hyperoxygenation, because we know that hyperoxygenation is always dangerous. So this is all about the first case. Now we will look into the second case.